Let's move on to exercises related to grammar portion. So first grammatical topic is of noun clause. नाउन क्लॉज क्या होते हैं? ये एक सेंटेंस में किस तरीके से एक्ट करते हैं, फंक्शन करते हैं. ये सब्जेक्ट के तौर पे भी सर्व करते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी सर्व करते हैं. और इनको पहचानने की निशानी क्या होती है कि ये यूजुअली कौन से वर्ड से स्टार्ट होते हैं? हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, whom, whoever, whose और why से. ये वर्ड्स मोस्टली क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए होते हैं. सो इन वर्ड्स से जो क्लॉज स्टार्ट हो रही होगी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रही होगी सेंटेंस में, उसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं. That you escaped injury amazed me. अब जो क्लॉज दैट से स्टार्ट हो रहा है और बोल्ड है, सिर्फ वही नाउन क्लॉज है. Then second example is I expect that I shall get a prize. I expect के बाद से हमारा noun clause start हो जाता है. So let's move on to its exercise. And it is pick out the noun clause in each sentence. So हमें इसमें noun clause को identify करना है. First is I often wonder how you are getting on. जैसे कि हमने पढ़ा कि जो clauses how, what, whoever, why, where से start होंगे, so वो noun clause होंगे. So this is the sign कि ये हमारा noun clause है. Second is she replied that she would come. That से हमारा noun clause start हो रहा है. Third is I went to see what had happened. So इसमें हमारा noun clause जो है वो what had happened से start हो रहा है. Fourth is he noticed that the clock had stopped. That the clock had stopped is the noun clause here. Fifth is he could not decide whom he should address first. Whom he should address first is the noun clause. Moving on to next exercise, which is rewrite each sentence changing the noun clause into a noun phrase introduced by an infinity. मतलब कि clause है, clause में हमारे पास verb होता है. phrases क्या होते हैं कि जो group of words होते हैं और पूरा meaning deliver नहीं कर पाते हैं. clauses पूरा meaning deliver कर पाते हैं, independent clauses. तो हमें इनको phrases में किस तरीके से change करना है? infinity के साथ. मतलब हमें infinitives add करने हैं. infinitives क्या होते हैं? to plus base form of verb. जैसे कि एग्जाम्पल देख लें. I know where I can find it. So I know where to find it. So this to is infinitive. इसी तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. So first question is they want him that he should not deceive them. इसको हम फ्रेज कैसे बना सकते हैं? They want him that not to deceive them. Second is we discuss how we could improve matters. तो इसमें हम क्या करेंगे? We discuss how to improve matters. इसमें हमारे पास to improve infinitive आ गया. Third is she learned how she should use the machine. So ये हो जाएगा she learned how to use the machine. इसमें हमारे पास to use जो है infinitive आ गया. Fourth is the child did not know how he can reach home. The child did not know how to reach home. Fifth is the class discussed what they should make for the fun fair. The class discussed what to make for the fun fair. Our next grammatical topic is of present perfect continuous tense. So इसकी form और structures देख लेते हैं. Form इसकी क्या है? Subject आएगा पहले, जैसे कि हर sentence में होता है. फिर हमारे पास helping verbs आएंगे has, have, depending on the subject. अगर हमारे पास singular subject है तो has लगेगा, plural subject है तो have लगेगा.
देन बीन लगेगा। बीन के बाद हमारे पास आ जाएगा वर्ब। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में क्या होता था, जो सिंपल कंटिन्यूस टेंस था आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगती थी, तो इसमें भी हैज़, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगेंगी। और इसका यूजेज किस लिए होता है? फर्स्ट इज एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। इसको शो करने के लिए कि कोई एक्शन ज़माने माजी में शुरू हुआ और ज़माने हाल में अभी तक कंटिन्यू है, तो उसको शो करने के लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। सेकेंड इज एक्शंस दैट हैव रिसेंटली स्टॉप, जो अभी अभी स्टॉप होते हैं एक्शंस, उनको मेंशन करने के लिए। एंड थर्ड इज टेम्पररी एक्शंस एंड सिचुएशंस, मतलब कि कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म हो रहा है जो कि परमानेंट नहीं होगा, थोड़े से टाइम के बाद उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ों को मेंशन करने के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है। फिर इसके अंदर किस चीज़ का यूजेज है? सिंस और फॉर का। Since and for are very common time expressions used with the present perfect continuous tense. और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? Since में जो since होता है हमारे पास, वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और जो हमारे पास फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। मतलब जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही होती है तो हम सिंस लगाते हैं। सिंस में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि अगर हम कोई टाइम बताना चाह रहे हैं और एग्जैक्ट आवर्स मेंशन कर रहे हैं, लाइक 5 o'clock, 7 o'clock, 6:30, 7:30, तो हम उसके साथ सिंस लगाएंगे। अगर हम ऐसे ही रफली आवर्स की बात कर रहे हैं कि 2 आवर्स पहले ये काम हुआ, कौन से 2 आवर्स, हमें एग्जैक्ट स्पेसिफिक आवर्स नहीं पता है, तो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। जब हम दिनों के नाम लेंगे या मंथ्स के नाम लेंगे तब भी हम सिंस यूज़ करेंगे। अगर हम ऐसे कहेंगे कि 2 मंथ्स बैक कोई हादसा पेश आया, तो कौन से 2 मंथ्स बैक, हमें नहीं पता, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च अप्रैल हो सकता है, सो हमें एग्जैक्ट मंथ्स का नहीं पता है, तो हम ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस के लिए फॉर यूज़ करेंगे और इनको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है जहाँ पे हमें स्पेसिफिक टाइम डिटेल्स पता हों। क्वेश्चन फॉर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे इस टेंस में? हम जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैव, हैज़, जो कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं, उसे हम हमेशा सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं। सो ऐसे ही इस केस में होगा, सब्जेक्ट से पहले हमारे पास हैव, हैज़ आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर हमारे पास वर्ब आ जाएगा, और वर्ब कौन सा होगा? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। मूविंग ऑन टू नेगेटिव सेंटेंसेस, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, फिर हैव, हैज़, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, मतलब हैव, हैज़ और बीन के बीच में नॉट सैंडविच होके आ जाएगा, और फिर एंड पे हमारे पास वर्ब आ जाएगा विच इज़ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स मूव ऑन टू इट्स एक्सरसाइज। So first exercise is use since or for to complete these sentences. So first is I have been studying dash 3 hours. So हमें नहीं पता कौन से 3 hours की बात हो रही है, 6, 7 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, कौन से? So हम यहाँ पे for लगाएंगे। Second is I have been watching TV dash 7 p.m. Now we are talking about exact hour, तो यहाँ पे हम since लगाएंगे। Third is Tahir hasn't been feeling well dash 2 weeks. तो हमें नहीं पता कि कौन से 2 weeks की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे for लगाएंगे। Fourth is Sarah hasn't been visiting us dash March. Now March is a specific particular month, तो इसके साथ हम since लगाएंगे। Fifth is he has been playing football dash a long time. For a long time, it's period of time. Sixth is he has been living in Peshawar dash he left school. वो कब से पेशावर में रह रहा है? जब से उसने स्कूल छोड़ा है, तो ये हमारे पास एक मखसूस टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे since लगाएंगे। Let's move on to its second exercise, which is answer these questions using present perfect continuous tense. तो हमें कुछ questions दिए गए हैं जिसको हमने आंसर करना है ये वाला tense यूज़ करके। So example देख लें। Why are you so tired? I'm so tired because I have been working for hours. तो इसमें since और for का भी usage होगा। Let's see how we can answer these questions. First is why are you wearing joggers? I
am wearing joggers because I have been playing football since morning. Second is, why haven't you finished your work yet? I haven't finished my work yet because I have been wasting time since evening. Third is, why are you looking pale? I am looking pale as I have not been feeling well for 2 days. Fourth is, why hasn't he seen you for so long? He hasn't seen me for so long because I was out of city since January. Fifth is, why are you yawning so much? I am yawning so much because I have been feeling lethargic for 6 hours. Last is, why are you working so hard? I am working so hard because I have been longing का मतलब होता है desire करना. I have been longing for promotion for a year. With this, we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. Inshallah, we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor from tutoriadotpk signing out.